રાજકોટ ખાતે 74મી ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ હોકી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું. આજથી 15 ડિસેમ્બર સુધી દેશભરમાંથી પોલીસ અને પેરામિલિટરી ફોર્સની મેન્સ અને વુમન્સની ટીમો ભાગ લેશે. એજીપીની અધ્યક્ષતામાં અલગ-અલગ 10 કમિટીની રચના કરવામાં આવી. ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ હોકી ટુર્નામેન્ટનું આજે ઓપનિંગ થયું. ઓપનિંગ સેરેમની પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે યોજાઈ હતી. આજ રોજ રાજકોટ શહેરના પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં 74 ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ હોકી ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આપણે જાણીએ છીએ કે કેન્દ્ર સરકારની ગૃહ મંત્રાલયમાં એક ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ સ્પોર્ટ્સ કંટ્રોલ બોર્ડ છે, જે બોર્ડના માધ્યમથી અલગ અલગ રાજ્યોમાં દર વર્ષે અલગ અલગ રમતોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રતિયોગિતાઓનું આયોજન કરવામાં આવતી હોય છે. ગુજરાત માટે અને રાજકોટ માટે ખૂબ ગર્વ અને આનંદની વાત છે કે આ વર્ષે ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ સ્પોર્ટ્સ કંટ્રોલ બોર્ડે 74th હોકી ટુર્નામેન્ટ પોલીસની યજમાની કરવાની તક ગુજરાત પોલીસને આપી છે. આજે આ ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં અલગ અલગ રાજ્યોના અને અલગ અલગ કેન્દ્રીય પોલીસ બળોના પુરુષોની 24 ટીમ અને મહિલાઓની 8 ટીમ પ્રતિયોગિતામાં ભાગ લેવા માટે આજે હાજર રહ્યા હતા. ખૂબ ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારંભનું આયોજન થયું. આપણા દેશમાં હોકીની એક ખૂબ ગૌરવશાળી પરંપરા રહી છે. ઓલિમ્પિકના ગોલ્ડ મેડલથી લઈને આ પરંપરાને જાળવી રાખવા માટે પોલીસના જવાનો પણ હોકીના રમતમાં ખૂબ ઉત્સાહથી રમતા હોય છે અને ભાગ લેતા હોય છે. દેશમાં હોકીની જે ગૌરવશાળી પરંપરા છે, એની સાથે સાથે યુનિફોર્મ્ડ સર્વિસીસમાં રમતગમતની પણ એક ગૌરવશાળી પરંપરા રહેલી છે. એ રાજ્ય સ્તર હોય કે રાષ્ટ્રીય સ્તર હોય, પરંતુ યુનિફોર્મ સર્વિસીસ પોલીસ પર્સનલ છે, એ લોકો રમતમાં, ખેલમાં પ્રતિયોગિતાઓનું આયોજન કરતા હોય છે અને ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લેતા હોય છે. એને કારણ છે કે જે કોર પોલીસિંગ વેલ્યુઝ છે, એકબીજા સાથે સંકલન, એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેશન, એકબીજા સાથે કોઓપરેશન, એકબીજા સાથે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એ પોલીસિંગની જે કોર વેલ્યુઝ છે, એ જ કોર વેલ્યુઝ અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સમાં, અલગ અલગ રમતમાં પણ જોવા મળે છે. એટલે પોલીસ જેવી બળમાં રમતગમતનું જો આ પરંપરા છે, એ કોર પોલીસિંગ વેલ્યુઝ સાથે સંકળાયેલી બાબત છે. આજે આપણા માટે ખૂબ ગર્વ અને આનંદની વાત છે કે 74મી ઓલ ઇન્ડિયા પોલીસ હોકી ટુર્નામેન્ટનું યજમાની કરવાનું તક ગુજરાત પોલીસને અને ખાસ કરીને રાજકોટ શહેર पुलिसने મળી છે. धन्यवाद जी। मैं पहली बात तो गुजरात पुलिस का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस जो टूर्नामेंट है उसको होस्ट किया है। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज रिस्पेक्टेड डीजीपी सर ने इसका उद्घाटन किया है और प्लेयरों को संबोधित किया है उनको बेस्ट खेलने के लिए और उनको बेस्ट अपना देने के लिए। तो इसके लिए मैं पहली बात तो गुजरात पुलिस का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए और प्लेयरों को इतना बूस्टअप करने के लिए। मैं बस ये बोलूँगा कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो शहर और जो स्टेट होता है उसमें बहुत से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं और लोग जो नॉर्मल सिटीज़न होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो इससे इंस्पायर होते हैं खेलों से। और सबको पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जितना आप खेलेंगे, जितना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आपके शरीर के लिए भी अच्छा होता है। ये टूर्नामेंट गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा कि वो खेलों में अपनी रुचि बढ़ाएं और अपने प्रदेश और देश के लिए खेलें आगे चल के, जिससे वो देश के लिए मेडल जीत सकें। एक्चुअली अगर मैं सेंट्रल की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग बेस्ट। और साई हो गया और टॉप्स हो गया, वो खिलाड़ियों को बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जब भी वो हाई परफॉर्मेंस के सेंटर में, मतलब जब भी वो प्रिपरेशन करते हैं, चाहे ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो,
तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और आपको टॉप्स की स्कीम के बारे में बता दूं कि टारगेट ऑफ द पोडियम स्कीम है, जो कि प्लेयरों को फाइनेंशियली और उनको एक्सपोजल देती है कि बाहर जाकर तैयारी करें। इसीलिए अगर देखा तो आप देखेंगे भी तो पैरा ओलंपिक्स हो गई या ओलंपिक्स हो गई, सारी की सारी जगह पे मेडल्स आ रहे हैं, अच्छा है। लेकिन अभी आज अगर हम गुजरात में इसके ऑल इंडिया पुलिस की बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि गुजरात हमेशा कल्चर्स के लिए फेमस रहा है। खिलाड़ी यहाँ से हमेशा निकले हुए हैं, अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, अच्छी मिट्टी है, तो प्लेयर्स डेफिनेटली टैलेंट अच्छा है। तो इस टूर्नामेंट का भी लोग फ़ायदा उठाएंगे और आगे चल के और ज़्यादा प्लेयर्स निकलेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पे होने वाले हैं, प्लेयर्स उसको डिफिनेटली ये सब एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे सेट होंगे और भी प्लेयर्स अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और तब तक बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से गुजरात से कॉमनवेल्थ गेम में खेलेंगे। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से खेलों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि भविष्य में खेल कोटा भी और चीज़ें यहाँ पे जैसे अदर स्टेट करते हैं डेफिनेटली भी करेंगे। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मेरे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन जिस हिसाब से खेलों को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, खेलों को ग्राउंड लेवल से यहाँ से उठाया जा रहा है, तो डेफिनेटली प्लेयरों के लिए आगे चल के ये अच्छा ही होगा।